Dear students, today's topic is Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. This law of motion gives expression for force. This law of motion gives force measuring formula. This law states that the acceleration produced in a body is directly proportional to the force applied and inversely proportional to the mass of the body. The direction of acceleration is in the direction of the force applied. This is the statement of Newton's second law of motion in terms of mass and acceleration. Suppose there is a body of mass m and you apply a constant force F on it, due to which the body undergoes uniform acceleration A in the direction of the force applied. एक बॉडी है जिसका मास m है, आपने एक कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट किया F, जिसके कारण इस बॉडी में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है A। इस लॉ में आप देखेंगे दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट यह कहता है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस्ड होगा, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, और यह एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक फोर्स एक्सर्ट किया, अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट फोर्स, जो इसमें एक्सेलरेशन कॉज किया है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यह एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा, आपने जो फोर्स एक्सर्ट किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मीनिंग हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी आप फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाएंगे जितना ही, उतना ही एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा। यानी दोनों, जब आप फोर्स इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड आप बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है यह कहता है F एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फर्स्ट पार्ट यह कहता है। सेकंड पार्ट है कि एक्सेलरेशन
inversely proportional to the mass of the object. एक्सेलरेशन मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप फोर्स एक्सर्ट करें, ऑब्जेक्ट जो है उसका मास अधिक है, हेवियर ऑब्जेक्ट है, तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और लाइटर ऑब्जेक्ट है तो उसमें एक्सेलरेशन आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। कब? जब आप कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, A proportional to F by M, MA proportional to F, F equals to K into MA। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K। If you take F is equal to 1 Newton, M equals to 1 kg, A equals to 1 meter per second square, then F equals to kMA, 1 equals to K into 1 into 1, then K is equal to 1. Now you can take the value of K in SI unit 1. Then the formula can be written as F equals to M into A. This is the expression for force. This is the equation for force. This is force measuring formula in the term of mass and acceleration. The force applied on a body is equal to the product of the mass of the body and the acceleration produced in the body. The direction of the force is in the direction of the acceleration produced. So this is the second law of motion that gives expression for force. The expression is that F is equal to ma. Now this law can be stated as in terms of momentum. In terms of momentum. What is momentum? Product of mass and velocity. This law states that the rate of change of momentum, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied and the direction of the change in momentum
is in the direction of the force applied. This is Newton's second law of motion in terms of momentum. Suppose there is a body of mass m, its initial velocity is u. You exert a constant force F on it for time t. Due to which the object acquires its final velocity v under uniform acceleration a. आपने एक फोर्स एक्सर्ट किया, अनबैलेंस्ड फोर्स. यह फोर्स कंटिन्यूअस आप अप्लाई कर रहे हैं. कितने टाइम तक? टी टाइम तक. कांस्टेंट फोर्स है. फोर्स का मैग्नीट्यूड आप बढ़ा नहीं रहे हैं. अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया तो वह टी टाइम तक 5 न्यूटन का ही फोर्स एक्सर्ट किया है. यह ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में नहीं है. रेस्ट में भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसको रेस्ट में नहीं लिया है. इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू है. फोर्स लगने से टी टाइम तक इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? भी हो गया. और इनिशियल वेलोसिटी यू से भी यूनिफॉर्मली बढ़ा है. यूनिफॉर्मली इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया, दोनों हो सकता है. लेकिन इस केस में आपने फोर्स एक्सर्ट किया है, यह रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, एक्सेलरेटिंग फोर्स है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ध्यान दीजिए. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. अब यहाँ इनिशियल मोमेंटम पी आई, आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल, पी स्टैंड्स फॉर मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल मोमेंटम पी एफ, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी. चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, पी एफ माइनस पी आई इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू. Rate of change of momentum according to Newton's second law of motion, force applied directly proportional to rate of change of momentum. F directly proportional to change in momentum by time. Rate of change in momentum ये मोमेंटम टी टाइम में चेंजिंग हुआ है. टी टाइम में एम वी माइनस एम यू जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है वह कितने टाइम में? टी टाइम में. यूनिट टाइम में कितना चेंज होगा उसी को आप कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो टी टाइम में एम वी माइनस एम यू हुआ, तो यूनिट टाइम में कितना होगा? एम वी माइनस एम यू बाई टी. एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी. एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू by t. And you know v minus u by t equals to
ए। इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ए इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। देन f equals to k into ma. In SI unit, k equals to 1, then f is equal to ma, or f equals to m v minus u by t. This is the expression for force F equals to m v minus u by t or F equals to ma. अब आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।